Imagine meeting two adults. One walks into every room thinking, I can do this, I can figure this out. And the other walks into the room thinking, I'm not good enough. One confidently asks for promotion and the other stays silent. One starts a business, the other never even tries. And here's the shocking part, none of them were born thinking this way. Those beliefs were learned. In fact, neuroscience कहता है that most of our beliefs around money, health, relationships, success, self-esteem, confidence, self-worth, even parenting are built not when we are adults, but they are built in 0 to 7 years, the first 7 years of our life. Can you imagine? So, if you are a parent today, you are not just raising a child, you are helping them write a story they'll believe about themselves for the rest of their lives. So, let's understand how the story gets written, meaning how the subconscious mind is formed, how the beliefs are formed. So, ये क्यों मैटर करता है? बिकॉज लॉट ऑफ पेरेंट्स ऑलवेज आस्क मी, मैम मैं मेरे बच्चे को कैसे कॉन्फिडेंट बनाऊं, मैं मेरे बच्चे को कैसे रेजिलियंट बनाऊं, मैं अपना नेगेटिव थिंकिंग कैसे स्टॉप करूं. द ट्रुथ इज कॉन्फिडेंस isn't taught in conversation. Mental resilience, your mental strength is not taught through one motivational speech. Beliefs are built through thousands of repeated experiences. हर एक compliment, हर एक criticism, every hug, every comparison, every appreciation, every time your child succeeds, every time they fail, how you respond, how you talk to them, your child is constantly asking one silent question: what does this experience say about me? Who am I? What are my strengths? And the answer they repeatedly hear becomes their belief. If I'm constantly telling my child, you're a champion, you can do it, you can do hard things, my child learns to do hard things because I tell him to do so. Well, let us understand what a belief actually is. A belief is simply an idea that your brain accepts as truth. And not because it's actually true. It's just your belief, it's just your perception. It's not the ultimate truth. But because you've experienced it often enough, think about learning to ride a bicycle. At first, your brain will say, oh, this is difficult. I can't do it. But after enough practice, it changes to, I know how to ride. And I'll give you my personal example. When I started running, I literally ran like a 4 kilometer and I was like, running is not for me. I can't do it. And today, I can run like a 10K like so easily. जो रिपीटेड एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन को मिलते हैं, योर ब्रेन विल लिटरली बी लाइक अडेप्टिंग टू इट, विल स्टार्ट बिलीविंग इट एज ट्रुथ. और इसमें कोई मैजिक नहीं हो रहा है. योर ब्रेन सिंपली अपडेटेड इट्स बिलीफ based on repeated experiences. And children do exactly the same thing. The difference is around 0 to 7 years, बच्चे का brain wave is in delta and theta mode. इसका क्या मतलब है? These are the brain waves that are related to deep learning and high suggestibility. As adults, हमें अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, तो we have a filter. We question कि ये सही है कि नहीं है, because we have that filter. But children, they don't have that filter. They will accept everything as it is. And hence, I always tell Agastya, Exi, I know you do a lot of masti, but you always listen when I tell you once to stop it, you stop it. And I love that about you. So, what I tell him is that you are a whole human. You be yourself. But when I tell you or when any adult tells you to do something, you always follow that. And that's the best thing about you. So he also knows that I can be my whole self, but I have to stop when an adult tells me to do so. Right? So this is one way where you condition their brain to live up to certain kind of character. That this is who you are, Agastya, and I love that about you. And if you tell a 3-year-old about a superhero, they'll believe you. If you repeatedly tell them that they're careless, they're moody, they will believe that as well, because their subconscious mind records the experiences without asking, is this actually true? They just accept it because their brain is in delta and theta mode, which is deep learning and constantly taking in everything that you tell them. They will take it in, they will accept it, they will not reject anything. And hence हम जो बोलते हैं ना, बच्चे गीली मिट्टी है, वो गीली मिट्टी है. They are like sponges. They absorb everything. They don't observe, they absorb. अब बात करेंगे how the beliefs are actually formed in 0 to 7 years. सबसे पहला, number 1 is through the words they hear.
इमेजिन अगर बच्चे से गलती से दूध का ग्लास गिर गया और पेरेंट उसको एकदम बर्स्ट आउट होके चिल्ला के बोलता है, ओ यू आर सो केयरलेस, तुम्हें कुछ आता नहीं है, यू आर जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन, आई एम टायर्ड ऑफ यू। वर्सेस अनदर पेरेंट सेड, ओह इट्स ओके, लेट्स क्लीन इट अप टुगेदर। द इवेंट आइडेंटिकल है, सेम इवेंट हुआ है, बट दो बच्चों में दो अलग उसका बिलीफ फॉर्म हुआ। पहले बच्चे के दिमाग में क्या आया, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम अ हॉरिबल पर्सन, आई एम अ केयरलेस पर्सन, आई एम यूजलेस, और मैं जब ऐसी मिस्टेक करता हूं आई एम नॉट लव्ड। दूसरे बच्चे ने क्या सीखा, ओह मिस्टेक्स हैपन्स, इट्स ओके, आई एम स्टिल लव्ड, एंड मिस्टेक होती है तो हम रिपेयर कर सकते हैं उसको। और इमेजिन ये लाइफ टाइम में कितना स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मेरे बच्चे के कैरेक्टर पे आता है। When I grow up, I become very unreasonable, unloving person अगर कोई मिस्टेक करता है, I will not forgive them. How can you make a mistake? You are so careless. But when I have been raised in an environment जहाँ पे mistakes happen, it's okay. You know what? Let's learn out of this, right? And all of this comes from generational parenting. Number 2, through emotional experiences. मतलब मेरा ब्रेन ना सारे इवेंट्स या इंसिडेंट्स याद नहीं रखेगा, बट मेरे ब्रेन कुछ वाइटल इमोशनल मेमोरीज बहुत स्ट्रांगली याद रखेगा। मीनिंग, think back about your own childhood. Do you remember all of your childhood? You definitely not. You definitely don't. But you definitely remember certain events जो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट किए हैं आपके माइंड पे। Probably someone who embarrassed you in front of the whole class, someone who made you feel bad, feel guilty, feel horrible. Those events you remember. Also remember the happiest days, जहाँ पे you felt most loved, your most favorite vacation, your favorite memory, favorite ice cream, you remember all of those things. Number 3, they learn through observation. Children definitely don't listen with their ears, they listen with their eyes. Children observe करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं एंड वैसे ही बनते हैं। मीनिंग, यू कैन टेल योर चाइल्ड डोंट शाउट, आप चिल्ला के आपके बच्चे को बोलो डोंट शाउट, हाउ इज दैट इवन मेकिंग सेंस? और बच्चा कॉन्स्टेंटली घर में झगड़ा देख रहा है, पेरेंट्स आर फाइटिंग, अडल्ट्स आर कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, योर चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न दैट। बट इफ योर चाइल्ड लर्न्स, व्हेन यू कॉन्स्टेंटली टेल योर चाइल्ड बिलीव इन योर सेल्फ, I believe in you, you can do it, your child का inner self esteem इतना ज़्यादा strong बनता है। And remember, your बच्चा is borrowing your inner voice. आपके जो शब्द है वो उनका inner voice बनता है when you are not around them. मतलब बच्चा जब स्कूल में जाता है तो घर में आपने उसके से किस तरह से बात की है वो सारे वर्ड्स उसके माइंड में रिपीट होंगे। Meaning, when the child is spoken with respect at home, with patience, a peaceful, harmonious conversation, motivational talks, appreciation, compliments, inspiring environment at home, तब मेरा बच्चा ऐसी एनर्जी लेके बाहर जाता है और उसके अंदर से वही एनर्जी आती है। वर्सेस जब घर पे मैं बच्चे को कॉन्स्टेंटली बोलती हूँ यू आर यूजलेस, यू आर सो मूडी, यू आर गुड फॉर नथिंग, उसको देखो वो कितना अच्छे से कर रहा है, आई एम टायर्ड ऑफ यू, बच्चा वही एनर्जी लेके बाहर जा रहा है और वो वैसा ही बन रहा है, वैसा ही बिहेव कर रहा है और वैसा ही उसका एनर्जी अंदर से आ रहा है। नंबर 4, थ्रू रेपिटिशन। मतलब एक नेगेटिव कमेंट से कोई मेरा बच्चा बहुत नेगेटिव नहीं बन जाने वाला है, बट अगर रिपीटेडली मेरा बच्चा नेगेटिव एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, स्टॉप क्राइंग, बी क्वाइट, यू आर ऑलवेज नॉटी, व्हाई कांट यू बी लाइक योर ब्रदर, अगर मेरा बच्चा कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें सुन रहा है देन माई बच्चा इज डेफिनेटली बिकमिंग लाइक दैट। इवेंचुअली ये सारे शब्द दे स्टॉप साउंडिंग लाइक ओपिनियंस and they start sounding like facts because subconscious mind loves repetition और जो बार बार रिपीट हुआ वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड का कोर मेमोरी बन गया। नंबर 5, थ्रू फैमिली स्टोरीज एंड आइडेंटिटी। मतलब सी एवरी फैमिली हैज अ स्टोरी। We are not good at maths, our family doesn't do this is not our family value, we are always unlucky, we are not creative। और मेरा बच्चा ये सारे beliefs adapt करता है। We don't believe in healthy lifestyle, we don't have active lifestyle, we like eating packet of junk food, we like Sundays, we like to just laze around। Versus other families, Sunday is an active day where we are going to take our children to park, to adventure, we're going to eat clean, we're going to eat healthy breakfast, we're going to go out for run। What kind of weekend, what kind of emotional environment, what kind of lifestyle, what kind of habits do you have at home? All of this is going to reflect in your child.
बिकॉज मेरा बच्चा यही सब देख रहा है और उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही बन रहा है. So, I really want you to scrutinize yourself before you scrutinize your child. And I always tell this that parenting is never about your kids, it is about who you are, who your core is, what your belief system is. And once you truly start believing in yourself, once you pick up healthy habits, once you have a great lifestyle, बच्चा वो देख के अडेप्ट करने ही वाला है. But I want you to look at yourself with a CCTV camera. What are you doing in your entire day? How is your day like? And what are the most common mistakes as far as subconscious mind is concerned जो हम parents करते हैं? Number one, correcting more than connecting. Parents focus on connection. Number two, comparing the siblings. Please don't ever compare because ये उनका childhood trauma बन सकता है. Number three, praising intelligence instead of effort. हम ना उनको डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स उनको सर्व नहीं करनी है. अगर मेहनत की है कोई चीज़ के लिए देन वी मस्ट अप्रिशिएट देम. नंबर 4, अज्यूमिंग बच्चे हैं भूल जाएंगे, उनको कुछ याद नहीं रहेगा. नहीं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरी मेरे बच्चे के माइंड में है उनको डेफिनेटली वो याद रहेगा. और एज पेरेंट्स हमें क्या करना है? नंबर 1, चूज आवर वर्ड्स केयरफुली, बी देयर रोल मॉडल, हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, ईट क्लीन and talk to them in an inspiring tone. गुड वर्ड्स यूज करो, उनको इंस्पायर करो. गलती करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, उनको माफ करो, उनको बोलो लेट्स करेक्ट दिस टुगेदर. कनेक्ट करो उनके साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो. पूरा दिन उनके साथ प्रेजेंट रहना इज नॉट क्वालिटी टाइम. थोड़ा टाइम भी दो, क्वालिटी टाइम दो, दैट इज ऑल दैट मैटर्स. बिकॉज चिल्ड्रन डोंट बिकम हु वी टेल देम टू बिकम, they become who they repeatedly experience. Every bedtime conversation, every repair after the failure, every encouraging word, every patient response, every moment of connection is shaping their belief. और ये सिर्फ उनका बचपन नहीं बना रहा है, ये उनका लाइफ लॉन्ग एकेडमिक्स, उनका मैरिज, उनका करियर, उनका सक्सेस इन लाइफ, उनके रिलेशनशिप सब कुछ डिफाइन कर रहा है. सो पेरेंट्स 0 to 7 years आर ट्रूली द गोल्डन ईयर्स. So parents, I'll close off this video with one question, that what is one belief that you would want your child to grow up with? Please comment in the comment section. I'd love to know your answers. Every week I make videos on child psychology, child brain science and subconscious mind related to children. So if you like this video, please share it with anyone who you think will be helpful with this. And please do like, share and subscribe so that I can keep helping you more with science-backed subconscious mind programming of children. Thank you.